हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। सो गाइस 13 जून को आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट, एक्सपेक्टेड इंटरव्यू डेट एंड योर एक्सपेक्टेड ऑफर लेटर डेट। सो गाइस जो एग्जाम आपका 16 मई को हुआ था, हम उसी एग्जाम के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे और आपको सारी अपडेट्स देंगे। सो गाइज लेट स्टार्ट नाउ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिकॉज हम डेली 2 to 3 वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं, जो कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब ही करो या फिर आप प्राइवेट जॉब ही करो, प्राइवेट जॉब इन द सेंस आईटी और नॉन आईटी सेक्टर्स। उसके बाद गाइज बात करते हैं, हमने अपनी जो प्लेलिस्ट है वो भी स्टार्ट की हुई है, दैट इज लास्ट 7 days प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जो हमने टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के लिए निकाली थी। उसके बाद फिर हमने इन्फोसिस के लिए लास्ट 5 days प्रिपरेशन स्ट्रेटजी निकाली थी और हमें स्टूडेंट से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और अगर आपको चेक करना है सो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में जाइए जो भी हमारी वीडियोस हैं और उनमें जाके हमारे जो कमेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स के देख लीजिए। सो गाइज चलिए बात करते हैं फिर इन्फोसिस एग्जाम 13 जून। सो गाइज we will be discussing in Hindi as well as in English, because there are a lot of students who are connected with us that are from south or did not understand Hindi well. So guys, we will be discussing in both the languages. The important things we will be discussing in English, and the usual things we will be conversating in Hindi only. So guys, let's start now. So let's continue. So see, your first letter, just a second. So guys, let's start now. So look here, this is your Infosys recruitment process. Congratulations on qualifying for the interview, right? That means if you have selected, means like your exam is on 13 June, right? Your exam is on 13 June. If you are selected, then after 8 to 9 days, I repeat, after 8 to 9 days means on 21 or 22, you will get your results. These are your result dates, 21 June or 22 June. These are your result dates. Getting? So guys, those who are selected in the written exam, in the written online exam, will get the mail, like I'll show you in the details, and your result will be on 21 to 22 June. So guys, these are the dates of your result of written exam. So guys, see, so as you know, see, means you will get this kind of mail, means you have given your exam on 13 June and all those things. And you can see, before you move your application to the interview round, we need some basic details to proceed your application further. That means अगर जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है, आपके पास ईमेल आएगी दैट जो एग्जाम आपने 13 जून को दिया था, यू आर बीइंग सेलेक्टेड इन दैट। आफ्टर दैट यू हैव टू गिव सम डिटेल्स बिफोर 30th में, मींस अकॉर्डिंग टू देम 30th में, मींस ऑन 16 दे हैव गिवन द एग्जाम एंड ऑन 30th मीन टिल 30th में दे हैव टू गिव द basic details. That means if you have given your exam on 13 June, that means till 27. So guys, that means if you are selected, so you will be given till 27 June, you have to fill the basic details. These are just basic details, means your name, address, your details like 10th, 12th, your graduation, these all the things. So how you have to fill that, let me tell you something. So see, you will be given a password. So just a second, you will be given a password and log into your info infytq. So you have to log in there, you have to write your login id and password, and after that you will be sent to the home page infotx, and then you have to proceed the Infosys recruitment process, and from there you have to fill the complete details. So these details are compulsory, I repeat, these details are compulsory. If you have been selected in the online written test, these details are compulsory for getting your interview round mail. So getting right, so this is your second mail and it will be on 25 May. That means you will get this detail, mean you will get on 21 to 22 June. Getting guys? So let's move to further. So after that, after you have written all your details, so do not worry if you have forgotten, means like you will get 2 to 3 chances to write the details. Means if you have forgotten, like for example, if you have got a mail on 22 like that, you have to fill all your details. That means अगर आपने मिस कर दिया है, कोई इशू नहीं है, आपको 2 to 3 रिमाइंडर्स भी आएंगे, मीन्स आपको मेल्स आएंगी दैट रिमाइंडर यू हैव टू फिल द डिटेल्स इफ यू हैव नॉट फिल्ड. दैट मीन्स कोई देर आर नो चांसेस दैट यू विल मिस द डिटेल्स. गेटिंग? आफ्टर दैट सी रिमाइंडर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, मीन्स अगर आपने वो फिल नहीं किया है तो आपको क्या होगा, रिमाइंडर मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल देखिए 27 मई को आपको रिमाइंडर फिर से आ गया उन स्टूडेंट्स को. ये 25 मई था और उसके बाद उन्होंने 25 मई को ही फिल कर दिया था, बट स्टिल जो उनकी ड्यूटी होती है इन्फोसिस, वो क्या करेंगे, आपको 27 को भी रिमाइंडर भेजेंगे कि आपकी 30th जो मई है वो आपकी लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की. अगर आपने फिल नहीं किया दैट मीन्स यू विल नॉट गेट इंटरव्यू राउंड मेल. सो गाइस गेटिंग, मीन्स जो आपके पास आने वाली है आपको लाइक 27 जून तक.
सो दैट मीन्स आपको 27 जून तक जो उनकी एप्लीकेशन फॉर्म होगी, या आप कह सकते हैं जो आपकी बेसिक डिटेल्स है, यू हैव टू फिल। सो गाइस, आफ्टर द बेसिक डिटेल्स योर इंटरव्यू विल बी शेड्यूल्ड, एंड व्हेन विल बी योर इंटरव्यू? सो लेट मी टेल यू द डेट्स. So your dates will be means 1 July to 3 July. Getting your interview dates will be 1 July to, I'm telling you, 1 July to 3 July. Getting means it can vary in 1 or 2 days only, not much. So 1 to 3 July, let me tell you, 1 to 3 July you will get your interview details, that your interview is having something something. So your interview will be scheduled, and your interview dates will be 1 to 3 July. So guys, after that you can see the message that is on 5 June your interview with Infosys has been scheduled, and after that what you, so see, let me tell you some more details. Your interview will be of 19 to 20 minutes only. How much time your interview will take? 19 to 20 minutes only. And your interview date is 1st July to 3 July. Getting those who have given their exams on 13 June. So after that, let me tell you. So after that, after your interview, you will get one more mail, and in that you have to fill some more basic details. So let me tell you. So the mail is on 7 June. That means after, means the interview is on 5 June, and after 5 June the mail is off on 7 June. That means your interview will be on 1st to 3 July. That means on till 5 July, 1st to 3 July your interview will be there, and till 5 July means 5 July you will get the details to fill after your interview. Getting means there are some more basic details, some depth details. So after that, after filling your application, means after you have filled your all the details, after 10 to 12 hours, means let me tell you, after 10 to 12 hours you will get your offer letter. I repeat, after 10 to 12 hours you will get your offer letter. Means like on 5 July you have filled your all the basic details, so means exactly on 6 July you will get your offer letter if everything goes smooth. I repeat, if everything goes smooth, your offer letter will be in your hands till 6 June. So guys, congratulations from my side, those who will be selected. So your offer letter you will get on 6 July. And let me tell you the joining date also. So after 10 to 15 days you will get your joining date also. After 10 to 15 days you will get your joining date. So guys, I know this Infosys is bit fast than your so-called TCS, NQT and all those things. So you will get your joining till, means I told you, on 20th July you will get your joining date. So I'm telling you till 20th July, means it can be before this but cannot be after this, means 20 or 21. So you can mark these 20 or 21, you will get your joining dates, and you will be having your offer letter in your hands on 6th or 7th July. So guys, this is all about we have discussed. So अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी हो, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस विद यू गाइस. सो चलिए हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आए. सो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड जिनका भी सिलेक्शन होगा. सो जय हिंद.